Assalamu alaikum dears. This is your Nazia ma'am. Hope you are doing good. Alhamdulillah. Okay, today we are going to see one more topic under literary forms and terms. The topic is tragic comedy. So, I have taught you what is comedy and I have taught you what is tragedy, right? But now we are going to see the mixing up of tragedy and comedy named as tragic comedy. Okay, a very important topic in literary forms. So you must know. So please watch it. Please listen it carefully and take the notes. And please take the notes. If you are unable to take the notes, take this screenshot or else take the notes afterwards. Okay, put the separate note. I am requesting you dears. Okay, let's move to the topic now. So first, tragic comedy. We see the definitions first. Tragic comedy is a literary genre that blends aspects of both tragic and comic forms, most often seen in dramatic literature. The term can variously describe either a tragic play which contains enough comic elements to lighten the overall mood or a serious play with a happy ending. So, now tragedy means I told you unhappy ending. Comedy means I told you a very happy ending, and it consists of lots and lots of comic elements. We saw Charlie Chaplin, we saw many persons. Okay, now tragic and comedy means it has both tragedy and comedy. The mixing up of both tragic and comic forms is called as tragic comedy. So it is oftenly used in the dramatic literature. So it has a various description. The tragic play which contains the comic elements. Why these elements are in the tragic play? In order to make our mood fresh, in order to make our seriousness to a little bit a happiness. So with a happy ending. So finally the play was started in a tragic way, and it has some comic elements with a lots and lots of seriousness, but finally it ends with happy ending. So it is tragic comedy. So tragic comedy वो होता है जिसमें both tragic and comic elements होते हैं, जिसमें ट्रेजेडी भी होती है और कॉमेडी भी होता है. ये अक्सर एक ड्रामास में यूज़ होते हैं. ये बहुत सारे डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे तरीक़े बयान करता है. जैसे कि एक ट्रेजिक प्ले, एक सीरियस प्ले, एक खौफनाक प्ले ही रख लीजिए. एक ट्रेजिक प्ले उसमें कॉमिक एलिमेंट्स डालते हैं, जैसे कि उसमें हंसी डालते हैं. एक हॉरर शो में एक हंसी डालते हैं, हंसने के क़ुव्वत डालते हैं, जिससे जो कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे मूड को अच्छा बना देते हैं. और एक सीरियस प्ले के साथ हैप्पी एंडिंग को ट्रैजिक कॉमेडी बोलते हैं. सो आई रिपीट यू, ट्रैजिक एक सीरियस प्ले के साथ कॉमिक एलिमेंट्स डालकर जब वो प्ले ख़त्म होता है तो उसमें हैप्पी एंडिंग होती है, उसको ट्रैजिक कॉमेडी बोलते हैं. सो इट इज़ अ मिक्सिंग अप ऑफ बोथ ट्रेजेडी and comedy named as tragic comedy. I hope you understand now. Tragic comedy na என்னன்னப்பா, அதில் வந்து சீரியஸாக விஷயம் கூட இருக்கும், சிரிக்க வைக்கிறது கேரக்டர்ஸும் இருக்கும். அந்த ப்ளே வந்து சீரியஸாக போயிட்டு இருக்கும். அந்த சீரியஸான ஒரு ப்ளேயில் வந்து காமிக் கேரக்டர்ஸை போட்டு நம்ம மூடுக்கு வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதனால அந்த ஓவரால் ப்ளே, சீரியஸ் ப்ளே இருந்து அதில் காமிக் எலமெண்ட்ஸ் போட்டு ஃபைனலாக அந்த ப்ளே வந்து ஒரு ஹாப்பி எண்டிங் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அந்த எண்டிங்க்கு பேர் தான் ட்ராஜிக் காமெடி. ஸோ ஐ ரிப்பீட், ட்ராஜிக் காமெடி இஸ் a mixing up of both tragic and comic elements. While a serious play was going on, there are some comic elements which lightens our mood
and the whole play has a different ending, that is happy ending, called as tragic comedy. Next, we move to the one of the most prominent and an eminent and a popular writer, Dryden's tragic comedy. So what Dryden told regarding this tragic comedy? So it is a defense of modern English drama by John Dryden. Theory of tragic comedy is given in his essay of dramatic poesy in 1668. Neander represent Dryden defends tragic comedy. So, the first example under tragic comedy is the most popular writer Dryden. So ड्राइडन ने ट्रैजिक कॉमेडी के बारे में क्या कहा है और उन्होंने कौन से अपने रिटन वर्क को एग्जाम्पल में लाया है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी सी हियर इज theory of tragic comedy is given in his essay of dramatic poesy. Of dramatic poesy is a kind of essay in which Dryden includes tragic comedy. So tragic comedy अपने essay of dramatic poesy में ड्राइडन ने इंट्रोड्यूस किया है और ट्रैजिक कॉमेडी के बारे में लिखा है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी केम अंडर दिस ट्रैजिक कॉमेडी इज ड्राइडन्स ஆஃப் ட்ராமாட்டிக் பொய்சி. ட்ரைடன் வந்து அவங்க தியரியில் அவங்க எஸ்ஸேலே ஆஃப் ட்ராமாட்டிக் பொய்சி, அந்த எஸ்ஸே பேர் வந்து அந்த ஒர்க் பேர் வந்து ஆஃப் ட்ராமாட்டிக் பொய்சி. அந்த ஆஃப் ட்ராமாட்டிக் பொய்சியில் ட்ராஜிக் காமெடினா என்னன்னு அவங்க எழுதியிருக்காங்க, அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் இன் ஒன் மோர் ஒர்க் நியாண்டர், where Dryden represents the Neander, defend tragic comedy. So next, Dryden definition of the play. So what Dryden says regarding this tragic comedy: a play ought to be a just and lovely image of human nature, representing its passions and humors and the changes of fortune to which it is subject, for the delight and instruction of mankind. So what is tragic comedy according to Dryden? It is a lively image of human nature. So it is a lively, a blissful image of human nature. It represents passion and humors. The passion means interest, it represents humors means joke. So and it changes the fortune in the play. Fortune means kismat, edirgalam in edirgalam in future. Fortune means luck, you can say it as luck, to which it is subject for the delight and instruction of mankind. It gives some subject and it instructs mankind in during this play. So Dryden definition in the play says that tragic comedy is a lively image of human nature. It gives a lively image to the human nature. It has some interest as well as some passion, some humor, some comic elements, some jokes, some satires. So and it definitely changes the luck, it changes some fortune and gives instruction to the mankind. So ड्राइडन्स का डेफिनेशन ट्रैजिक प्ले को लेकर क्या है, वो बोल रहे हैं ये एक तरीक़ा है ह्यूमन नेचर को ज़िंदा रखने का, एंड इसमें इंटरेस्ट और हंसने की क़ुव्वत ज़्यादा है. सो ये एक हमारे लक को चेंज करता है प्ले में, एंड ये बहुत सारे नसीहत भी इंसानों को देता है. ஸோ ட்ராஜிக் காமெடி பற்றி ட்ரைடன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஹியூமன் நேச்சர், இது வந்து ஒரு ஹியூமன் கிட்ட இருக்கிறது ஒரு ஹாபி, அண்ட் அந்த ஹாபி வந்து எப்படி அவங்க காமிக்கிறாங்களா இன்ட்ரெஸ்டோட எப்படி சிரிக்க வைக்கிறது, அது வந்து அவங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து அது வந்து அவங்க அதனால வந்து கொஞ்சம் லக்கும் சேர்த்து இருக்குது. மெனி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கூட மேன்கைண்ட்க்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ லைவ்லி இமேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சர். இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் as well as little bit comedy, little bit humors. It changes the fortune to which it is subject and instructions to mankind. Next, defend tragic comedy on the following grounds: contrast when placed near
set off each other. A scene of myth has the same effect on us as music. Contrast when placed here, set of each other. A scene of mirth has the same effect on us as music. In other words, a comic scene produces relief. Myth does not destroy compassion, the serious effect which tragedy aims at is not disturbed by mingling of tragic and comic. So here Dryden says it has different places. It has different settings. So a scene of mirth has the same effect as music, as it has been compared to a music. That the terror scene was compared to music. In other words, it also deals with some comic scenes which gives reliefs to us. See, whenever we see some comic scenes in the tragic, in the very horrible play, definitely we'll enjoy to some extent. It gives some kind of relief to us. So definitely myth does not destroy the compassion. It does not destroy the serious effect what the tragedy aims in the play, but it has some mingling of tragic and comic. Just as the eye can pass from an unpleasant to pleasant object, soul can remove from tragic to the comic. So when we see some unpleasant and pleasant object, when our eyes form passes from an unpleasant to pleasant object, in the sense जब हमारी आंखें कुछ बुरा भी देखती हैं जैसे और अच्छा भी देख लेती हैं, जैसे कि हम जैसे पार होते हैं वहाँ हम कुछ एक्सीडेंट देख लेते हैं और आगे चलो तो कोई शादी भी देख लेते हैं. तो जस्ट बिग पास थ्रू यू गेट एन यू just assume that you are in a bus, you are traveling in a bus and you are moving in some highway and you are seeing something an accident to take place, then definitely your mood change. And finally when you pass through you are seeing one marriage there, when wedding was going on there, then you feel so happy, your mood changes. So just it is a what Dryden says, it is something that is unpleasant to pleasant object, where our soul accepts both the tragic as well as the comic elements. So हम लोग जो हैं, जैसे ही हम कहीं भी बस में या कहीं ट्रैवल करते हैं जहाँ एक्सीडेंट देखते तो हम अफसोस करते हैं. जैसे हाँ ही हम एक शादी देख लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं. सो ड्राइडन का ये कहना है कि ट्रैजिक कॉमेडी भी ऐसा ही है, एक एक अनचाहा नमूने के साथ जो भी चाहत वाला नमूना देखते हैं, जहाँ हम लोग एक ट्रैजिक के साथ एक कॉमिक को मिक्स करते हैं. सो ट्रैजिक कॉमेडी भी यही है, थोड़ा सा नापसंदगी और थोड़ा सा पसंद, जो भी हम लोग अपने आप में जो भी हम देखते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट देखने पर अफसोस करना, शादी देखने पर खुश हो जाना. एक्सीडेंट इज़ अनप्लीजेंट, वेडिंग इज़ प्लीजेंट मोमेंट्स. सो द सेम थिंग, ट्रैजिक प्लस कॉमिक. The English have prepared a new way of writing, not known to the ancients. If they had tragic comedy, perhaps Aristotle would have revised his rules. What pleased the Greeks would not satisfy an English audience. It's all a question of progress of the change of taste. So many writers have their different tastes. So Dryden can say tragic comedy is a unpleasant to pleasant form, that is mixing up of tragic as well as comic elements. So many writers, that is Aristotle, have they had tragic comedy. Perhaps if Aristotle got a chance of dealing with tragic comedy, definitely he revised all the rules in English literature. सो अरिस्टोटल को अगर मौका मिलता तो वो भी ट्रैजिक कॉमेडी के बारे में ज़रूर बोलते और कुछ रूल्स भी बताते. सो अरिस्टोटल वन ऑफ द राइटर्स. सो वी आर कमिंग अक्रॉस द नेक्स्ट राइटर हियर. फर्स्ट वी सॉ ड्राइडन, next we are seeing the Aristotle here. So totally two you have seen.
The next, what please the Greeks would not satisfy an English audience. So the Greek peoples, they are not satisfied with the what the audience says. So it may be a chance of progression or progression of the change of taste. So it depends upon the mindset of a person. Some may like to see the horror movies, some may like to see the comic movies, some may like to see the love story movies. So it depends upon the mindset. What Greek says that we cannot satisfy the audience only by putting this comic elements. So it depends upon the mindset what the people have. Some may like comedy, some may like tragedy. So इन्हें क्या बोलना चाहते हैं कि ग्रीक लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि माइंड जो हमारा माइंड होता है वो हमारे माइंड पे डिपेंड होता है कि हम लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं है. जैसे कि कुछ लोगों को ट्रैजिक मूवीज़ पसंद है, टेरर पसंद है, एक्शन मूवीज़ पसंद है, कुछ लोगों को कॉमिक मूवीज़ पसंद है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट विच वी हैव. So it depends upon the mindset the progression deals with. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ அரிஸ்டோட்டலுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடச்சிருந்தா டெஃபினெட்லி அவங்க லிட்ரேச்சரில் ட்ராஜிக் காமெடி இன்க்ளூட் பண்ணி மெனி ரூல்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் க்ரீக் பீப்புள்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ட்ராஜிக் காமெடி இல்லைன்னா ஒரு காமெடினால வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொன்னாங்கன்னா, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மைண்ட் செட். நம்மளோட மைண்ட் என்ன எப்படி இருக்குதோ, நம்ம மைண்ட் செட் வந்து இப்போ ஆக்ஷன் மூவிஸ் பிடிக்கும்னா சில பேருக்கு ஆக்ஷன் மூவிஸ், லவ் ஸ்டோரிஸ், சில பேருக்கு காமிக் மூவிஸ் பிடிக்கும். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மேன்கைண்ட், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆர் மைண்ட் செட் வாட் வி like to see. It depends upon our like and dislike. So now you can see mingling of mirth with serious plot. So there are two images here, two masks are there and the two masks are appearing in a different manner. The one mask is laughing, the other was little bit serious with wrinkles on their faces. So mingling of mirth with serious plot. So the French plays. So the summary in 2 lines, we can say it as simple meaning of all this is life is a mixture of happiness and sorrows and play should be reflection of life. So in play also should be mixture of sorrows and happiness. So here a simple meaning deals here is what is life. Life में खुशी और गम दोनों का होना ज़रूरी है और दोनों होते हैं. बट ये कुछ भी हो, हमें कुछ इससे सीखना पड़ता है. हम कुछ ना कुछ तो हमारी लाइफ से सीखते हैं. अगर हमें गम आए तो हम उस गम से कुछ सीखते हैं, अगर हमें खुशी मिले तो उस खुशी में भी हम कुछ सीखते हैं. सो फाइनली इसमें कहा जाता है कि एक प्ले उसमें हंसी और गम दोनों मिलकर रहने चाहिए. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ வந்து ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம் கூட இருக்கணும், வருத்தம் கூட இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் நம்மளோட லைஃப்க்கு வந்து அது ஒரு லெசன் டீச் பண்ணணும். நம்ம வந்து ஹாப்பினஸ்லே ஏதோ கற்றுக்குறோம், சேட்னஸ் வந்தால் கூட நம்ம வந்து கற்றுக்குறோம். அதே மாதிரி தான் ஒரு பிளேயில் வந்து ஹாப்பினஸ் கூட இருக்கணும், சாரோ கூட இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ what is a simple meaning here deals with life is a mixture of happiness as well as sorrow, but it could teach a lesson to us in such a way that a play should also deals with some sorrows and happiness of dramatic poesy. See, now you can see the images how Dryden views on this tragic comedy. Here on your left side there is mask, in your right side you have some pictures. See, it is tragedy plus comedy. One mask deals with the tragedy and the other deals with comedy, that is tragic comedy. So next image there is have some kind of fear as well as laughing. When you see that picture you laugh, and one more image shows you a little bit
ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मास्क हैं और 2 मास्क 2 तरीक़ा हमें बताते हैं। जैसे कि एक मास्क में परेशानी है और दूसरे मास्क में हंसी है। हाँ, परेशानी है ट्रेजेडी और हंसी है कॉमेडी, सो ट्रेजिक कॉमेडी। दूसरा इमेज आप देख सकते हैं, एक लड़की जो हैरान है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उसको देखते ही हंसी आती है, तो इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी है। So finally, one more definition for tragic comedy. Tragic comedy is a literary device used in fictional works. It contains both tragedy as well as comedy. Incident or serious series of incidents. Incident एक भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं. Incident ஒன்று கூட இருக்கலாம், இல்லை பல incidents அதில் வந்து பேசிருக்கலாம். ஃபைனலாக இது என்னன்னா mixed tragic and comic characters. So finally it is a mixing up of tragic as well as the comic characters. Examples of tragic comedy. See, before that we saw Dryden's view on tragic comedy. Next we saw what Aristotle says. Next we saw about the Greek people's thinking regarding tragic comedy. So probably we came across 3 examples. So the next example is, this is a 4th example. You note it down carefully, dears. Example of tragic comedy is Samuel Beckett's Waiting for Godot. So you cannot pronounce this as Godot. You have to pronounce it as Godot. Godot. Here T is silent. I am repeating, T is silent. आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं? Waiting for Godot. आप इसको Godot नहीं पढ़ सकते हैं. See, waiting for Godot அப்படி தான் படிக்கணும்ப்பா. Waiting for Godot அப்படிலாம் படிக்கக்கூடாது. T வந்து silent. I am repeating you again and again. T is silent in Godot. So Samuel Beckett's Waiting for Godot is another example for tragic comedy. Here also you can see the 2 images. One image has some laughing appearance and the next image has some serious appearance. So here there is a mixing of tragic comedy. So written originally in French, main subject deals with tragic comedy. So the next example here is The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. Written by William Shakespeare in 1596 or in 1598. It is considered one of the most popular tragic comedy. So here also there are many comic as well as tragic elements. So here one more example. So in this slide we saw 2 examples, like Samuel Beckett's Waiting for Godot and next Merchant of Venice by William Shakespeare. So again the Dryden's views on tragic comedy. Tragic comedy combination of tears as well as smiles. Drama dealing with ordinary life and delightfully combine tears and smiles. Continued gravity depresses the spirit, though mirth gives the refreshment. So when the depression, when we have tough times, definitely we have some kind of depression. But when we have a little bit happiness in our life, it is a kind of refreshment. எப்போ வந்து நம்ம வந்து சேடாக இருக்கோமோ அது வந்து ஒரு டிப்ரெஷனாகவே வந்துடும். எப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கோமோ நம்ம லைஃப்ல ஒரு रिफ्रेशमेंटाக அது வந்து அந்த सिचुएशन இருக்கும். हम जब गमगीन रहते हैं तो हम लोगों को उदासी छा जाती है. लेकिन जब भी हमारी लाइफ में खुशी आती है तो एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं रिफ्रेशमेंट है, जैसे कि हम फ्रेश हो जाते हैं, हंसते हैं तो अच्छा लगता है. So myth does not destroy compassion or kindness. I can pass from unpleasant object to a pleasant one. So it is a overall review for you. So what we saw. Before. So we saw the definitions of tragic comedy, and in that we saw what Dryden says, what Aristotle says, and what the Greek people says. Next we saw about another example, Samuel Beckett's Waiting for Godot. Then again the next example, Merchant of Venice by William Shakespeare. Next the overall review, that is what we saw before here, that is
definition we saw. Next, Dryden views. What Dryden views? It's a combination of tragedy as well as comedy. That is, our eye when passed through the unpleasant to a pleasant one. So the next Dryden views on tragic comedy is classicism, greatness, chivalrous and penetration as a critic. Next, one more writer, Dr. Johnson, accepted Dryden views. That is, he accepted. Dr. Johnson said that I accept Dryden views as that it is a mingling of tragic as well as comic. It gives some relief to the human mankind. So according to Johnson, what Johnson said, tragic comedy is a truer to nature. For in nature is also good and evil, joy and sorrow, mingle is countless ways. So Dryden is more liberal, the mingling towards the mingling of tragic and comic. So dears, one more time I am revising you. What we saw means, first we saw the definition of the tragic comedy. Next we saw the Dryden's views regarding this tragic comedy. Under that we saw it is a combination of happiness as well as sorrow. So I pass through the unpleasant to pleasant one. So next, one more writer gives the description, gives the example is Aristotle. If Aristotle has given chance, definitely he also include some kind of tragic and comedy in his literary work. Next we saw about the Greek people's thinking that we cannot expect the comedy alone, the comedy from the audiences. They can it depends upon the mindset of the people, what they like and what they dislike. Next, the example we saw, that is I shown you many that is images about the tragic and comic elements. Next we saw about the definitions again. The another example I said Samuel Beckett for Waiting for Godot. Waiting for Godot is a work written by Samuel Beckett. Next the example is The Merchant of Venice by William Shakespeare. Next we saw about the Dr. Johnson's view. He accepted Dryden's view that definitely a play should have tragic as well as comic elements, so in order to give the dramatic relief to the audience. So हम लोगों ने आज कितने राइटर्स को पढ़ा है? जैसे कि मैंने पहले आपको डेफिनेशन सिखाया है. முதல்ல வந்து டெஃபினிஷன் சொன்னப்பா. next I said about the examples of Dryden's view on tragic comedy. Next about the Aristotle. Next about the Greek peoples. Next I shown you the images in order to make you clear what is tragic and comedy by using this mask and the pictures. And then I told you about another example, Waiting for Godot by Samuel Beckett, Merchant of Venice by William Shakespeare. Then what Dr. Johnson says regarding this tragic comedy. So he accepted about the tragic comedy, that a play should possess this tragedy as well as comedy so that it gives reliefs to the mankind. So என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஜான்சன் என்ன சொல்கிறாங்க, நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் ட்ரைடனோட வியூ வந்து கரெக்ட். ஏன்னா ட்ராஜடியும் இருக்கணும், காமெடி கூட இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து ப்ளே வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, ஆடியன்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இது ஒரு ரிலீஃப் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஃப்ரம் த பிகினிங் டில் த எண்ட் வெறும் ட்ராஜடி இருந்தால் போர் அடிக்கும். இப்போ அந்த ட்ராஜடியில் கொஞ்சம் அந்த காமிக் சீன் இருந்தால் டெஃபினெட்லி வில் என்ஜாய். இட் கிவ்ஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரிலீஃப் டு our mind. So I think you people understood well. I shown you the definitions about the tragic comedy. I told you 2 or 3 definitions here. First we saw about the what is tragic comedy, that is mixing up of tragic as well as the comic elements. Next I told you the tragic comedy is a literary device used in fictional works, both tragedy and comedy. So you can write it down, this 2 definitions. If you want, you can take this as your essays, as your so I think it is enough to follow these slides.
because if you follow guide, that's also no problem, no issues. So we saw about the definition of tragic comedy, we saw many examples, so you should not omit any examples here. Dryden views on tragic comedy may be your 5 mark. So uh, according to Johnson, maybe your 2 mark. So finally the definition of tragic comedy is also your 2 mark. So I hope you understood well. If you have any doubt, dears, you can put your comment in the comment section. I'm ready to explain you again, dears. So I'm ending my class now. So inshallah, see you tomorrow. Till that, stay safe, stay blessed. Allah Hafiz and bye, dears.